Hello, Vikram. How are you? Welcome all to our OPSC Wallah Physics Wallah family. So here, जैसे हम देखिए कि here we have got as many exciting offers for all of you जोटा कि हमारे PW तरफ रू provide करा होची. Okay, जैसे मैं कहूँगी कि Odisha exam Mahapack we are providing only in 1299, that is okay, which is Mahapack for your total. Saksam batch देखिए it is only 4499. So there is prelims mains सब cover होगा. Udanti high court batch 799. Okay. Okay, Ashwini, good afternoon. Ashwini, good afternoon. Odisha geography book list कहबी, हैला कहबी Vikram. Then Jabaj Odisha Police ଆମର only 699 ରେ ଆମେ cover କରୁଛୁ. Then Odisha Police combo pack 1299. Across batch जोटा कि already batch टा run चालची एटा. Okay, that is only 1499 and Sanrakshak Odisha Police pack that is 399 रे. Okay, these are all the जोटा कि PW तरफ रू एटा provide करा होची. Good afternoon Tanmay, good afternoon. Avilipsha. PW तरफ ये सब जिनस PW करा है because to access your competitive exam everyone can access. Okay, so a affordable rate रे देबार सब major reason है कि everyone can access your competitive exams जोटा कि बहुत जन को स्वप्न था जल्दी तमें देखियो बाहरे your market it is too high rate and समस्त को dream पूरा करिया पे these are the affordable rates and of course this is a revolutionary steps that has been taken by the PW family for you the Odisha people. Okay, Odisha of सब exams में particularly. अगो पुणी देखिबा next जदि मैं कहबी वर्तमान आज हम पढ़िबा हैला प्रतियोगी बैच जो जदि देखियो प्रतियोगी बैच जोटा कि completely ऐप रे मैं कहबी it is completely a free batch हैला particularly it is completely a free batch particularly जो थरे कि तमे सब जिंस पढ़ी परिबो इथरे basically guidance पाई परिबो हैला not only the geography also history हैला polity economy current affairs okay science tech सब जिंस रा तमे इथरे guidance पाई परिबो it will help you okay ठीक अछि आज हमर good afternoon Ashwini Tanmay Avilipsha okay अच्छा एठी तमे पचारछ कि सर बही कोन बुक लिस्ट रो ओडिसा हला ओडिसा ज्योग्राफी में बुक लिस्ट पचारछ नै रे एठी कहउची ओडिसा पई हला ओडिसा ज्योग्राफी में मु कहबी बुक लिस्ट बेसिकली ठीक अछि एनसीईआरटी रे बेस्ट मु कहबी तमरो एनबीटी पब्लिकेशंस गवर्नमेंट रो हला एनबीटी publication रो बाहरची हैला दिस इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पर्टिकुलरली हैला एनबीटी टे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ओडिशा डिविजन्स पे बाहरची एनबीटी पब्लिकेशन रो देखियो आ गोटे नहले और तमे एटा पढी परिबो हैला मिश्रा पब्लिकेशन रो ओडिशा ज्योग्राफी मिश्रा पब्लिकेशन हैला आउ थर्ड जदि मैं कहबी तमे देखि पारे मिश्र पब्लिकेशन परे हमरो यू विल गो फॉर अनदर बुक दैट इज आर्यहंत हैला आर्यहंत पढ़ी पारि आर्यहंत पब्लिकेशन ओडिशा ज्योग्राफी हैला दिस इज आल्सो वेरी नाइस बुक्स ठीक अछि और सबुठी इंपोर्टेंट हैला तमरो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस मन रखो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बहुत इंपोर्टेंट दैट इज हैला ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट हैला दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट ओके ठीक अछि
वर्तमान आम डिस्कस करवा क्वेश्चंस डिस्कस करवा ठीक अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करवा क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज ऊपर जोटा आज मुझे कहली को डिस्कशन क्वेश्चन करवा to know your state book that is also available Vikram I am also telling know your state book that is good okay so what basic जिनसो मु तुमको एटा कहली विक्रम कि हला दिस वन हला एथिरे ठीक अछि एनपीटी रे भी बहुत जिनसो पाइबो गवर्नमेंट रो पब्लिकेशन तो तमे जेतरे बहुत भलो जिनसो पाइबो भी सेतरे ओके क्वेश्चंस करबा सुनो कोनो से बुकशॉप को जाउछ प्रथमे तमे एनालिसिस करिवो को पार्ट हमको भल लागुची निजे देखिए के जानिबो हला मते पचाले जदि मु कहबी मते एनबीटी भल लागे आ मते आर्यन मिश्रा बुक भी भल किंतु बहुत एग्जॉस्टिव देछि आ जदि मु कहबी माने तीनटा अंक बही मो पाकर अछि प्लस एक्स्ट्रा बिकॉज़ बुक कलेक्शन इज ए हॉबी तमे देखो जोटा तुमको भल लागिवो सेटा मतलब मु सजेस्ट करी तम मन के दरकार नहीं कारण जदि तमे पढुछ बहुत जिंस कवर करियर अछि तो बेटर तमे हला आ तीनटा भीतर तुमको जोड़ा बेस्ट भल लागु सेटा आनिबो हला एते टिके बहुत लंबा देछि तुम बहुत नॉलेज पे बहुत भलो आर्यन भी बहुत भलो हला देखियो क्वेश्चंस करबे एमसीक्यू ओके अरोरा बोरियलिस occurs in exosphere ओजोन स्फीयर आइनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर देखो आज जो मु कहरुची पर्टिकुलरली जियोमॉर्फोलॉजी रे मझरे मझरे मु तुमको किछिटा माने स्टैटिक जीके टाइप रो माने रीजनल बेस स्टैटिक जीके सेगुडा पछारी काहे कि तमरो या संगे टच रहबो का संगे तमरो मैपिंग संगे अदरवाइज नॉलेज सेतल को ब्लैंक हे जबो बिकॉज़ दैट इज द वे दैट यू कैन स्टडी एवरी टाइम मैप को नेकी जबो सो दैट तमरो जीएस फ्लैट भी क्लियर हबो करंट भी क्लियर हबो हला एंड टोटल गोटे इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव तो तमरो लार्जर हबो ए क्वेश्चन को ऑरोरा बोरियलिस occurs इन द हला पहिलो इटा एंड मन को एवरी दीटा क्वेश्चन परे विल डिस्कस द आंसर हला प्रति दीटा क्वेश्चन परे करलो इटा रे exosphere ozonosphere and B someone choose as B anyone else okay D mission possible B D aurora borealis एनसीईआरटी के ही पढ़ुन आउ किए विक्रम व्हाट इज योर आंसर कोरे जा भूलो ठीक हो को नो प्रॉब्लम बी स्पिरिट विक्रम बी बी समस्त बी को नोचो बी ओजोनोस्फीयर आंसर इज अरोरा बोरियलिस इज इन सी इट इज नीदर ए नीदर बी हला नीदर डी आंसर इज सी हला आइनोस्फीयर कहबी विल डिस्कस दिस वन हला प्रति दीटा क्वेश्चन पर हमें आंसर डिस्कस करबा ठीक अछि ओके नेक्स्ट द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज इज रिकॉर्डेड इन द इक्वेटोरियल रेंज हॉट डेजर्ट मेडिटेरियन रीजन टाइगर रीजन कोडी होचे 3 नंबर क्वेश्चन को हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज ठीक अछि इक्वेटोरियल रीजन हॉट डेजर्ट मेडिटेरेनियन टाइगर अच्छा तुम मैंने आंसर दो ये बड़ा लिखियो लिखल 2A कि 2B कि 2C कि 2D you have to write like this है 2A 2B 2C और 2D अच्छा 2A समस्त A को चूज कर A B मैक्सिमम B A आंसर में जदि कहबे एनीवन एल्स वाज लेफ्ट आउ कि अच्छा रे
अच्छा आंसर जो तुम कहबी इट इज नीदर ए नीदर बी नीदर सी आंसर इज डी टाइगा कहीं इट रेंज पचारची मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज मन रख रेंज माने कौन प्लीज नोट इट मैक्सिमम माइनस मिनिमम समस्त ये भूल कर मैक्सिमम माइनस मिनिमम है हाईएस्ट रेंज किए ठीक अच्छे आस ये the greatest recorded temperature range in the world around Siberian cold pole मन रख in Russia रशिया रे गोटे जगह अछि कोन वर्कोयांक्स रे माने नॉर्मली टेम्परेचर रहे तमरो -48 आ शीत दिन तले तमरो विंटर आसे -148 पर केते हबो -148 पुनी माइनस हला ठीक अछि डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कल हला केते हला 48 यदि मु तमने एटी मु करूची 148 माने माइनस रे पुनी माइनस करो तुम केते 48 -48 हला तो टोटल केते हला डिग्री सेंटीग्रेड रे माने पाखा पाखी 100 डिग्री पाखा पाखी डिफरेंस आछी तो एटा मैक्सिमम डिफरेंस एटा वर्कोयांक्स हला को जगहटा दैट इज इन द वर्कोयांक्स ए जगहटा हला रशिया रा वर्कोयांक्स जोथरे की बहुत बेसी ठंडा रहे वर्कोयांक्स हला हैव रेंज 150 और दैट इज 105 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 68 डिग्री सेंटीग्रेड एतिकी वर्कोयांक्स को कोडी रशिया रा गोटे जगह वर्कोयांक्स ओके मन रखी था टाइगर समस्त क्वेश्चन करिवार भूल कौन समस्त एटा को छाड़ी देछ मन रख दिस इज कॉन्सेप्चुअल रेंज मींस मैक्सिमम माइनस मिनिमम हला ज्योग्राफी गोटे सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट हला साइंटिफिक सब्जेक्ट मु कहबी ह्यूमैनिटी प्लस दिटांग अछि सो पढिला बडे क्वेश्चंस को टिके केयरफुली पढिबो ओके नेक्स्ट तापर आंसर टा कोन थिला आयनोस्फीयर देखो द नॉर्दर्न लाइट्स आर एक्चुअली एक्टिव ऑल द ईयर राउंड नॉर्दर्न लाइट्स माने एक्टिव ऑल द ईयर राउंड से माने एक्टिव थांती but because they are only typically visible in the aurora zone particularly they are typically visible in the aurora zone that to be 65 degree to 72 degree in the north hela 65 to 72 degree north they are not visible from April through August when the aurora zone experiences nearly 24 hours of daylight particularly hela aurora borealis मन रखो हला तमरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ऑस्ट्रेलिया से सादर्न हेमिस्फीयर ओके नेक्स्ट माने पर्टिकुलरली नॉर्वे रे बहुत भलो देखा जाय नेक्स्ट करो इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड चीफली बासाल्ट हला इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग हला फॉलोइंग कमा पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड चीफली माने पेट्रोलियम को रॉक रे मिले बेसी बासाल्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी नन ऑफ दिस पहला आंसर yes you can say me no problem एबीसीडी भितरु सौम्य सुमित सेडिमेंटरी पेट्रोलियम बाकी तुम लिखि परिबो 3 जेमति कहली 3A 3B 3C यू कैन राइट इन दैट वे बासाल्ट की कुछ श्रीदेवी नाइक ओके ए करछो चूज सी चूज करछो हला आंसर जदी देखिबो नीदर ए नीदर बी डी आंसर इज योर सेडिमेंटरी रॉक्स हला नेक्स्ट डीटा कहला एटा हमर जियोमॉर्फोलॉजी हला पर्टिकुलर कवर करछ 3C ओके 3AC पर्टिकुलर जदी देखिबो दिस इज योर सेडिमेंटरी रॉक्स मन रख हला हम पढिबा बुझिबा प्रति दीटा क्वेश्चन परे परे हमें आंसर डिस्कस करबा ओके 4 नंबर टा कहला व्हाट आर जियोसिंक्लाइन्स
Then arch of force in the strata of the earth crust, major structural downfalls in the earth crust, large scale rises in the earth crust, sliding plate margins inside the earth crust. ABCD भितर कहला 4ABCD भितर B 4B सब कौच मैक्सिमम है BC आउ किए 4B को कौच आउ anyone else yes anyone else okay answer देखियो it is B for Bombay है ना it is neither A C D it is B for Bombay next देखो major structural downfalls जदि कहबी in the earth crust है ना a geosyncline is basically कौन is a large depression geosyncline कौन गोटे large depression थाए is a large depression in the earth crust that contains a large accumulation of sediments and sedimentary rocks है ना The concept was developed by the American geologist James Hall in 1859. 1859 मसीह जेम्स हॉल आपको डेवलप करते जियोसिंक्लाइन जियोसिंक्लाइन केम देखिया पे पर्टिकुलरली जदि म कहबी हला फॉर एग्जांपल हला पर्टिकुलरली गोटे क्रस्टरल फोल्ट हला जियोसिंक्लाइन दिस इज जियोस सेडिमेंट्स हला इट इज लाइक योर जियोसिंक्लाइन अर्थ रो गोटे क्रस्ट है दबी के रही है दिस इज जियोसिंक्लाइन दिस इज वाटर हला दिस इज वाटर sea water there sea or ocean or sea water यहाँ भी and this is your down folded or down drop down drop crust ठीक अच्छे okay down drop crust for example मुझे दिखाई भी example किए Gulf of Mexico in USA Gulf of Mexico in Caribbean Sea ठीक है Gulf of Mexico in Caribbean Sea हला Gulf of Mexico in Caribbean Sea हला this is your geosynclines एटा कहआ जाय कोन geosynclines हला दबी के अछि जोटा दबी जाय प्रेशर तो नेक्स्ट ता पूर्वांचल कोन थला सेडिमेंटरी रॉक्स हम जानले हला इंडिया रे पेट्रोलियम कोडी पाउच मेनली सेडिमेंटरी रॉक्स कौन कौन सेडिमेंटरी रॉक्स आर मेड फ्रॉम लेयर्स और स्ट्राटा or of mineral particles found in other rocks that have been weathered and form newly found organic matter. Sedimentary rocks measure थाए कौन particular जब कोई भी newly formed rakes or strata mineral particles. Sedimentary rocks are important because they preserve a record of ancient landscapes, climates, mountain ranges, as well as the history of the erosion of the earth. ठीक है जी हमारे जो पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल्स जो बाहर है फॉसिल फ्यूल्स मोस्टली बेसिकली योर दैट इज एन ऑर्गेनिक बेसिकली ओके फ्लोरा फोना मिसिंग सेटा रहा
ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मझे मझे मुझे रीजनल पार्ट भी कवर दूसरी जो तुम टच रहा आई थॉट टू है मेजर रही जियोमॉर्फोलॉजी बट हियर आई थॉट टू गिव दैट वन सो दैट तुम पढ़ा सांगे गोटे माने पर्टिकुलरली एटलास सांगे तुम टच रहा जो कि जीएस तुमको बहुत हेल्प हो पर्टिकुलर द कालाहारी डेजर्ट कहली लाइज इन व्हिच साइड ऑफ द साउथ अफ्रीका है वेस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न पार्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट नन ऑफ दिस कहलो कालाहारी डेजर्ट जोटा तुम ना शुणी है को पार्ट रे रही साउथ अफ्रीका व्हिच साइड साउथ वेस्टर्न सी ओके ओके मैक्सिमम साउथ वेस्टर्न कोच आउ किछि केप टाउन 5D none of this who choose it as none of this Sumit you choose dita janko CBDB Cape Town answer jodi dekhibo Kalahari desert hela lies particularly in the northern part era neither A C D answer is Bombay B for Bombay this is wrong A wrong C wrong D wrong right we will discuss एटा कौन पे कहूँ बिकज तुम मैपिंग तुम जो देखुच तुम मैप बेस्ड क्वेश्चन रीजनल ज्योग्राफी कम से कम 6टा क्वेश्चन आसला मैपिंग टा बढ़ेबो अच्छा 6D देइछ ओके 6D देइछ ओके 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 सोमित द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका इज प्रिटोरिया डरबन ईस्ट केप टाउन देन योर ईस्ट लंडन देन केप टाउन सुमित चूज कला डी आउ किए लेजिस्लेटिव कैपिटल साउथ अफ्रीका पचारती कौन लेजिस्लेटिव कैपिटल प्रिटोरिया डरबन ईस्ट लंडन केप टाउन केप टाउन anyone else only Sumit is participating rest all yes आंसर जो देखियो नीदर ए बी सी कि नो इट इज योर डी केप टाउन लेख है मन रख तीन टा थाए लेजिस्लेटिव कैपिटल के फाइनेंशियल कैपिटल जुडिशियल कैपिटल सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव गोटे जुडिशियल फिर देखिए केप टाउन कौन केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वेयर ब्लोमेफेंटो इज योर जुडिशियल कैपिटल है मन रख एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल गोटे तुम प्रिटोरिया केप टाउन इज लेजिस्लेटिव ब्लोमेफेंटो इज जुडिशियल कैपिटल साउथ अफ्रीका नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग इन केप टाउन साउथ अफ्रीका पार्लियामेंट कोठी अछि है केप टाउन रे Kalahari desert विषय कहबी Kalahari desert is a larger arid and semi arid sandy area in the southern your Kalgadi Africa extending 9 lakh square kilometer covering much of the Botswana and parts of Namibia and South Africa. South Africa just northern portion रे अछि particularly northern portion रे हला बोस्टवाना और नामीबिया को कवर कर मैं तुमको एटलास इति में देखे पनी एंड जेतु तमर गोटे क्वेश्चन आंसर तुम सेशन करूचो मु आई होप तुम माने जहां भी इति पढुचो सांगे सांग जाएंगी चलला परे निजर एटलास भी तुम देखि परिबो तुम इयर प्रणाम रोहित वेरी गुड गॉड ब्लेस यू आई एम गुड रोहित हाउ आर यू
बहुत दिन पर ओके अच्छा it देखिए तापर कौन it has a huge tract of excellent grazing after good rains the Kalahari desert in southern part of Africa and the geography portion of the desert हला Kalahari मन रखो गोटे हला desert जोटा कि semi arid desert Kalahari national park भी अछि that's a very good हला Kalahari national park next देखिबा देखो जियोमॉर्फोलॉजी रे तमरो जदि मु कहबी किछि क्वेश्चन तमरो आसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ओनली वन क्वेश्चंस मु दोछि जोथरे कि सेटा कवर होबनी नले जियोमॉर्फोलॉजी अंडर रे सेटा मु पुरै दोछि काहे ना एटा अदर एंसिलरीज रे आसी ठीक अछि करो एटा देखिबा इफ इट इज 3.5 टा बाची एज ब्रासिलिया माने कोडी ब्राजिल रे हैला व्हिच इज 50 डिग्री वेस्ट देन व्हाट इज द टाइम एट इराक दैट इज 45 डिग्री ईस्ट है कहले कौन 9 AM 4 9:40 सकाळ राति 8:20 संध्या 8:20 है योर नाइट 9:50 PM देन 7:40 सकाळ जदि ब्राजिल रो ब्रासिलिया रे जोटा कि 50 डिग्री वेस्ट तर है तर लॉन्गिट्यूड ताले से 3:30 बाजी है खरा बड़ ताले इराक रे जोटा कि इराक रो कैपिटल है इराक तेना टाइम केते जोटा कि 45 डिग्री ईस्ट ए बडा क्वेश्चन ऑलरेडी तमरो पचरा होची हला ओपीएससी पचरची कहले एटा सॉल्व करो मंजू यस सत्यजीत गुड आफ्टरनून मंजू यू शुड इट एज बी सॉल्व करो एटा एई बडा तमर क्वेश्चन 2021 रे आस्तला 2021 ना 22 प्रीलिम्स रे भी आस्तला 21 22 प्रीलिम्स रे ए बडा दिस इज मैंडेटरी सब एनसीईआरटी इट इज नॉट बियॉन्ड एनसीईआरटी ब्राजील रे जदि 3.5 टा हेची जोटा कि तार 50 डिग्री वेस्ट देन व्हाट इज द टाइम एट इराक Yes, anyone else? Everyone is solving. Shall I solve it? और तुम्हें करिवो? Shall I solve it? समझते? A, C, B समस्त को different answer. A, B, C, D भीतर किए कहूची A, B, C, D maximum कला A, B, C और D टा नउची मी है सब होइला वाह बहुत बढ़िया A B C D ए लैटिट्यूड प्रथम बेसिक्स में एनसीईआरटी पछ प्रथम बेसिक चैप्टर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तापर तमे काई मोडा कहरे काई एटा पढला पर जियोमॉर्फोलॉजी तमे एंटर करले बहुत जिंस जानिबो से जिंस ऊपर यस ओके मोडा सॉल्व कर साले सॉल्व इट देखो मु जाननी यार आंसर कोन मन रख प्रथम क्वेश्चन कौन दला ब्राजील ब्राजील कोठी अछि ईस्टर्न मन लॉन्गिट्यूड दिस इज हला जीएमटी लाइन ग्रीनविच मीन टाइम एटा हला ग्रीनविच मीन टाइम हला और इंटरसेप्ट टाइम एटा हला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हला ब्राजील हला ब्राजील कोठी साउथ अमेरिका रे अछि केते 50 डिग्री वेस्ट यदि कहबी 50 डिग्री वेस्ट दिस इज हला वेस्ट
मन रख आउ एपटे तुम लंगिट्यूड यहाँ ईस्ट आम अच्छे ईस्ट पटे गले टाइम टा कौन मन रखी था गेन हुए टाइम गेन मन रख यहाँ जानी था वेस्ट पटे गले कौन हम टाइम लॉस हुए कैलकुलेशन तुम 50 डिग्री वेस्ट लंगिट्यूड ब्रासिलिया इज द कैपिटल लेट्स से इट है ब्रासिलिया ब्राजिल ब्रासिलिया केते बच्चे टाइम कौन देछे at 3:30 pm ब्रासिलिया जोटा कि ठीक अच्छे सॉरी 3:30 pm तो से कहला कि है एटी अच्छे टाइम टा केते 3:30 pm ये पचार इराक है इराक है 45 डिग्री ईस्ट रे इराक है तुम निजे देख निजे तुम बागदाद सपोज इराक कैपिटल है किए बागदाद ये है बागदाद ये टाइम टा केते व्हाट इज द टाइम टाइम केते बाच दिस इज द क्वेश्चन राइट केमती सॉल्व करिवो नॉर्मल आमे कौन जानते लंगिट्यूड रे भला बुझ ये है गोटे मुझे कर दूची कौन जदि तुम ईस्ट पट को जाऊच तुम टाइम गेन कर वेस्ट पट को गले तुम टाइम लॉस करुच है टाइम गेन कर टाइम लॉस करुच सो ये जब मुझे कहबी केमती तुम कैलकुलेट कर आम ये कौन जानते पृथ्वी बुलापाई ये मुझे आगे लिखी दूची अच्छा मैं लिखी टोटल लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस टोटल लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस केते केते सपोज है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस फ्रॉम ब्रासिलिया है फ्रॉम ब्रासिलिया टू इराक माने बागदाद मुनेली बागदाद बागदाद है इराक कैपिटल बागदाद है बागदाद केते इराक रे केते केते लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस माने ए डिस्टेंस टा दिस इज x एटी की मन रख आउ एटा हला y एटू माने एटू एतिक हला ग्रीनिच मीन टाइम को आकु मो रेफरेंस पॉइंट नेली दिस इज रेफरेंस पॉइंट भला भी बुझो ब्रासिलिया रु ग्रीनिच मीन टाइम केते हला x डिस्टेंस एटा हला एटू एतिक y सो केते हला इज इक्वल टू x प्लस y जानिबा टाइम टा केते लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस मो लिखली तो एटी केते हला एटा लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस केते अछि 50 प्लस 45 50 डिग्री 45 केते हला 95 डिग्री ता माने कोन जानले लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस 95 डिग्री अच्छा मते एना को हम पृथ्वी बुलिबा पई केते नउची 360 डिग्री पृथ्वी बुलुची केते घंटा रे 24 घंटा रे हला तो मुझे लिखली और मुझे भी सेम लिखी 24 घंटा रे पृथ्वी बुलुची केते और 24 आवर रे 360 डिग्री गोटे घंटा रे केते बुलला 360 बाय 24 केते हला 15 डिग्री हमने हमें जानले अर्थ बुलुची पर्टिकुलरली 1 आवर रे 15 डिग्री हाँ कि नहीं और मुझे लिखी और मुझे लिखी 60 मिनिट रे है ठीक अच्छे 15 डिग्री बुलची और मुझे लिखी पारि 15 डिग्री अर्थ रोटेट कर 60 मिनिट रे 1 डिग्री केते बुलिवो 1 डिग्री बुलिया पे केते लागियो 60 बाई 4 15 4 मिनिट माने प्रति 4 मिनिट रे पृथ्वी 1 डिग्री बुलुची इज इट क्लियर मन रख सो कौन है तो मैंने 1 डिग्री बुलला 4 मिनिट दिस इज ए कैलकुलेशन पृथ्वी बुलुची 360 डिग्री रे केते 24 घंटा रे 360 डिग्री बुलची 1 घंटा रे 15 डिग्री 1 आवर रे 15 डिग्री सो 60 मिनिट रे 15 डिग्री देला 1 मिनिट तले केतेला 1 डिग्री की बुलला 4 मिनिट 15 डिग्री बुलची 60 मिनिट रे तमा तुम क्लास जतले 1.5 घंटा हे जिवो पृथ्वी बुलचे केते 15 प्लस 7 होते 22 एंड अधे डिग्री बुल जाइथो पृथ्वी एटा हला कैलकुलेशन
तो बर्तमान केते जानले 1 डिग्री 4 मिनिट तो 95 डिग्री केते हला इंटू 4 मिनिट तान केते हला 9 चौ 36 360 20 380 मिनिट 380 मिनिट माने 380 मिनिट और मु लिखिबी केते और 6 आवर्स ठीक अच्छे 6 घंटा 60 रे हरली केते हला 6 घंटा 20 मिनिट 6 घंटा 20 मिनिट या माने अच्छा वर्तमान को टाइम गेन हो ईस्ट पट को गले इराक पट को जदि एपट को में ब्राजील रो आसुचंती कोठी इराक पट को हमर इंडिया पट इराक इराक तो मटे पछर अछि ना इराक पट आसु टाइम गेन हबो ता माने एई प्लेस रो 3टा 30 हेची एई प्लेस रे निश्चित रूपे टाइम टा आगु को थिबो 6 घंटा आगु 6 घंटा 20 मिनिट ता माने पाखा पाखी केते थिबो हला 9टा 50 हेतिबो 6 घंटा 20 मिनिट माने केते 3टा हला दिन 3:30 खरा बड़ तमन एटी केते हेतिबो राती 9टा 50 देखिबा चॉइस रो अछि कि नै सी दिस वन आंसर इज योर सी बुझी हला वर्तमान दिस इज द करेक्ट अप्रोच 6 आवर 20 मिनिट्स हला जोटी तमन देखिला एटी हला ठीक अछि 6 आवर 20 मिनिट्स तो आंसर एटी कोन हला तो 9टा 50 मिनिट ता माने जदि ब्राजील रे हेजी तमर केते 3टा 30 हला 3टा 30 रु 6 घंटा 20 मिनिट ऐड कर देलो हला 3टा 30 पीएम प्लस एटी मु कोन ऐड करली प्लस 6 आवर 20 मिनिट्स ऐड करले केते होची तमर आसी गला केते राती 9टा 50 9:50 पीएम आंसर इज दिस वन ता माने एठी में आंसर एटी केते हेतो राती 9:50 पीएम ता माने हम कोन जानले इराक रो राजधानी बागदाद ब्राजील टू पाखापाखी ब्रासिलिया टू 6 घंटा 20 मिनिट आगे दिस इज द अप्रोच ओके एटी देखिबा आंसर तबरे कोन दिछ आंसर हमरो 7:50 पीएम इन ईस्ट टाइम गेन्स व्हाइल द लूजेस इन द वेस्ट एज पर लॉ हिसाब रे जो कैलकुलेशन ओके बुझी जाओ सब क्लास रे पढ़ा है एगुडा नेक्स्ट latitude is a place determined by gnomon clinometer establishing the meridian of a place dividing the circumference of a angular distance कहला वो आंसर एटा देलो latitude is a place determined by gnomon clinometer establishing the meridian of a place dividing the circumference 8 नंबर रो क्वेश्चन ग्नोमन को समस्त यूज करछो मो नेक्स्ट सीट देखै दिली सब देखि दोजो ओके नो प्रॉब्लम ठीक अछि हैला पढिला रे ग्नोमन आंसर एंगुलर डिस्टेंस की कहूची आंसर देखियो इट इज एक्चुअली लाइक डी नो इट इज आंसर इज योर ए ग्नोमन बी सी डी नो हम कहूची एटा ए हला आंसर ग्नोमन latitude of a place is determined by हला इट इज योर oh I am sorry no it is correct it is हला sorry dividing the circumference ठीक अछि मेटा उल्टा बुझी कर देली this is your determined by dividing the circumference by angular distance this is D is correct everyone D is correct A गलत B गलत C D for Delhi हला latitude of a place is determined by your dividing the circumference by angular distance this is the circumference by the angular distance latitude हला your D for Delhi this is the correct answer D है कहीं जदि मुझे कहबी दिस इज आवर अर्थ है दिस आर द लैटिट्यूड्स मन रख है 0 सब बड़ है लैटिट्यूड किए इक्वेटर है तुम 0 डिग्री देन तुम पुणी आसो सपोज मुझे 10 डिग्री देन दिस इज योर 23.5 डिग्री दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेमती एटी भी सेमती 10 डिग्री दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस इज योर southern hemisphere how it is also 23.5 degree that is your tropic of
Capricorn. This is your particularly 45 degrees, 66.5 degree, 66.5 degree, that is your Antarctic circle. This is Arctic circle, 66.5 degree north. It is the south. It is the Arctic circle. How suppose 80 degree, 90 degree is the pole, south pole, north pole. It is north pole. Then ये भी 80. How ये है south pole, that is 90 degree. So this is the thing, Arctic circle, Antarctic circle. So equator को divide करछो, that is your angular distance, dividing the circumference by a angular distance. So D is correct. One रखो. Next देखिए 9. The origin of the universe is about 15.2 billion years ago, 16 billion years ago, 13.8 billion years ago, 18 billion years ago. कहला एटा ABCD भितरु आम यूनिवर्स केबे हेतिला? When our universe केबे आस्तिला? पूजा, प्रणाम पूजा. God bless you. Origin of the universe kebe 15.8, 16, 13.8, 18 billion years. Okay, Puja 9C. Price wo choose korcho. 9C ko choose korcho. Okay. 9C को choose करछो. Anyone else? Okay. Okay. ठीक अच्छे. Answer जो तुम कहिबे, it is neither A, neither B, D. Answer is your C. 13.8 billion years ago हेतला. अला explanation हम discuss करिबा. Next question करो. Red planet of solar system is K. Venus, Mars, Jupiter, Saturn. रेड प्लैनेट क्या कहा जाए? वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. कैसे? Rayans, fastest answer by Rayans. Very good. Mars. समस्त choose करछो Mars. It is B for Bombay. Red planet of our solar system is your Mars. B for Bombay. Very good, Rohit. Very nice. है Mars. Answer of Mars tomorrow. सहजिया question इटा discuss करिवा. Very good, Rohit. A गलत, C गलत, D गलत, D, B is the answer. देखिवा कौन? Mars is the fourth planet in our solar system from the sun. Sun का पकड़ू Mars देखिवा fourth रे अछि. And the second smallest planet in the solar system. Solar system रे इटा second smallest planet. ठीक अछि? Being larger than only Mercury, Mercury to only बड़ा ये. Mars carries the name of the Roman of the war, is often referred to as the red planet. है अब मन रखो, the red color is due to red color is due to the presence of iron. Red color टा जोटा होची, it is due to the presence of iron. Very good. Mars रो दीटा अछंती किए Phobos and Deimos. ठीक अछि? Phobos और Deimos ला तार दीटा. ठीक अछि? तार दीटा सैटेलाइट. Mars रो दीटा सैटेलाइट हले Phobos. Two satellites. मन रखो, only two satellites. ठीक अछि?
है सब स्मॉलेस्ट तुम डेमोज सब छोट अच्छा 13.8 कौन ला द वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज के बिग बैंग मॉडल जदि हमें देखिबा बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग मॉडल ला वाइडली एक्सेप्टेबल कौन वी स्टेट दैट यूनिवर्स बिगन एज एन incredibly hot and dense point roughly 13.7 billion years ago है 13.7 billion years ago ru agu को तमरो universe has been created प्रथम हेतिला okay. The Big Bang theory is a popular one. Basically, the Big Bang theory says that universe came from a singular solid mass. Big Bang theory हमको कौन कुए? Universe has come from a came from a singular solid mass. But singular solid mass रो प्रथम universe create हेतिला. At one instant, everything began to expand. तापर धीरे धीरे कौन हला? Everything began to expand. Right? ठीक अच्छे सो आमर आंसर है 13.8 बिलियन इयर्स अगो ओके यूनिवर्स जब क्रिएट है प्रथम आजिकल तुम कह कि 13.8 बिलियन इयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी बाय जॉर्ज लेमैट वेरी नाइस बहुत बढ़िया रही जॉर्ज लेमैट 1912 मसीह प्रथम कहले मन रख जिते भी आम थ्योरी अच्छा भर बिग बैंग थ्योरी है सब एक्सेप्टेबल माने नेबुलर हाइपोथेसिस ठीक अच्छे जोटा कि एमाल्युएन कांट देन लाप्लास थ्योरी सब बेस्ट है तुम this one big bang theory okay next देखिबा which rock is formed by cooling of the hot magma हला को rock टा hot magma form है कि cooling of the hot magma igneous sedimentary metamorphic both A and B पहला which rock formed igneous, sedimentary, metamorphic, both A and B. Maximum choose करछो अच्छा only two both रोहित choose both आउ कि जन choose करछो igneous हला anyone else cooling of the hot magma yes anyone else okay cooling of the hot magma माने magma जोड़ा ठंडा हला बने कोन हुए ओ रॉक टा igneous हुए कि sedimentary हुए कि metamorphic हुए कि both igneous और sedimentary सेठी लिखिछु both A and B yes की कहबो हला आंसर जदी कहबो it is answer is your cooling of the magma answer neither D C B answer is your A is the answer A हला igneous rock हला we'll discuss this one okay अरे अच्छा D भी आउट कहलो thanks no रे both go it is only igneous rock sedimentary rocks tomorrow weathering erosion ro हुए सेमति नै हला cooling of the hot magma रे sedimentary rock हुए नी next the basic source of all mineral is sand hot magma rocks crystals बढ़िया क्वेश्चन एबडा सब अछि पूरा conceptual question किए कहबो yes basic source of all minerals sand hot magma rocks crystals ABCD देखी को A नाले B नाले C नाले D basic source of all minerals sand hot magma rocks समस्त चूज करछो C रश्मिता C रोहित रॉक
C maximum is C समस्त चूज करछो C okay C but answer is neither A neither C neither D answer is your hot magma B for Bombay हैला ACD नो हॉट magma कहीं magma ही सबु जिनसर मूल कारण माने जो लाभा बाहर पृथ्वी भितर बाहर सेटा एनसीईआरटी पढ़ो रे एनसीईआरटी पढ़ो प्लीज रीड एनसीईआरटी 12 हॉट magma कौन कहबी द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स मन देखि सुनो एक्सप्लेनेशन द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट magma in the interior of the earth okay in the interior of the earth when magma cools crystals of the minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form the rocks ठीक अछि systematic form से आसीबो कोन all minerals and the hot magma in the interior of the earth basic source of all minerals मन रखो when magma cools जेतरा magma बाहर को पळे आसे cool हो जाए केमती देखो एटी पर्टिकुलरली तमरो हॉट magma एटी पड़छि पर्टिकुलरली जस्ट एटी खाली जानि के रख केमती खाली बुझिया पई हला एटला तमरो magma आसिला पर्टिकुलरली magma बाहरला हला लाभा दिस इज लाभा बाहरला लाभा ठीक अछि दिस इज योर हला magma ठीक अछि magma ठीक अछि एटी तरह लाभा डिपोजिशन बाहर को आसले कोन हला लाभा डिपोजिशन सेटी बाहर को आसला लाभा डिपोजिशन तो ये जिते बड़े है सबू जाक मन रख दिस तले है तुम कौन magma chamber तलकू magma chamber एटा एति खाली बेसिक जिन मन रख ठीक अछि magma chamber एटा तो इतले लाभा उद्गीकरण है बाहरला बाहरला पर इसकी जमा है तो सब तापर कोन एठी जमा ही पड़ला जेमति मु कहबी फॉर एग्जांपल इंडिया डेक्कन लाभा प्लेट्यू इज बेसिकली एन हैला डेक्कन लाभा प्लेट्यू तुम सुनिथिबो डेक्कन लाभा प्लेट्यू हैला ठीक अछि डेक्कन लाभा प्लेट्यू हैला सो तापर कोन वेदरिंग एरोजन हैला पर जोडा हैला सेडा तमर सेडिमेंटरी रॉक्स पुनी जेतला सेडिमेंटरी आउ हैला मेटम तमर इग्नियस रॉक जेतले तमर हॉट विथ दे आर एक्सपोज्ड टू और सब्जेक्टेड टू हेवी प्रेशर एंड टेंपरेचर दे फॉर्म टू द मेटामॉर्फिक रॉक हैला एतिकला बेसिक जिंस हैला एटी लिखिलो सो द मिनरल्स व्हिच कंटेन मेटल्स कॉल्ड द मेटालिक मिनरल्स example के hematite माने iron ore metallic minerals and the metallic minerals which are profitably mined and called as the ores ठीक है खाली एति की जानो हला कि मैक्सिमम जोटा कि हमर लाभा जो उद्गीर्ण होछि magma that forms your basic source of all minerals okay हां intrusive rocks जोटा भीतर हुए जदि मैं एटी कहबी कहूछि ई भीतर जति सपोज एटी गोटे रॉक एटी फॉर्मेशन हला ठीक अछि एटा हला तमरो इंट्रूसिव रॉक्स आउ एगुडा हला कोन एक्सट्रूसिव रॉक्स सब क्लास रे डिस्कस हेछि हैला एक्सट्रूसिव रॉक्स आउ इंट्रूसिव रॉक्स एंड दिस इज योर इंट्रूसिव रॉक्स माने जोटा एक्सटर्नल बाहर को आसी लाभा ठंडा हुए सेटा हला एक्सट्रूसिव हैला एंड देन योर एक्सट्रूसिव प्री पढ़ाउछि रे ठीक है क्वेश्चन आंसर किशोर हमर गोटे करा होची जब तबे पढ़ियो चाहछ हमर वर्तमान हैला मु कहबी कि हमर एटा गोटे बैच आरंभ होची वर्तमान एटा पर्टिकुलरली हैला सक्षम एटा अक्रॉस बैच इज रनिंग ठीक अछि सक्षम बैच जोटा कि हमर पर्टिकुलरली एबे चलची सक्षम बैच रे कोन अछि तमरो प्री कम मेंस हैला फर्स्ट इंटरव्यू जोटा कि क्लियर 360 गोटे अछि तमे पीडब्ल्यू ऐप सब डाउनलोड करो जोटा हम कहि पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कले तमे सब इन्फॉर्मेशन पाइबो और विश्वास करो एति की कम पैसा रे केही भी माने पर्टिकुलरली माने ओडिसा रे कोनोसी इंस्टीट्यूट एबन दो नांती फॉर एंड दैट टू बी यू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स हैला हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस टेक एनवायरनमेंट एवरीथिंग यू आर गेटिंग 4499 क्लियर 360 ले कोन हो तुमको हैला एडिशन ऐड ऑन गोटे हबो जोते कि ओनली 6500 माने 6500 नो आउरी कम ऑफर थिले इत्ती की कोर्स जोटा कि तुम प्रोवाइड करा होची एंड दैट टू बी सच एन अफोर्डेबल रेट जोतरे कि तमरो 1-to-1 मेंटरशिप प्रीलिम्स रे पेपर इवैल्यूएशन मेंस रे पेपर इवैल्यूएशन एंड 1-to-1 मेंटर संग तुम पारियो तो जो माने चाहू जो पीडब्ल्यू ऐप जॉइन करके करो एटा कबर जो तमर दिया होची प्रतियोगी बैच रे हला
प्रतियोगी बैच रे तुमर एटा कंप्लीटली फ्री दिया होची सो दैट तुमर पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके यू कैन एक्सेस टू दैट हैला देन यू कैन गेट मन रखो दिस इज एन बोनस दिस इज एन वेरी गुड फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी रादर आई कैन से सो आई विल दिस वन आउ सेथिरे पुणी हमर जो सक्षम बैच टा आरंभ हो जोटा कि तुम तार वैलिडिटी है 2025 पर्यंत 2025 डिसेंबर पर्यंत है तो ग्राब ऑल द अपॉर्चुनिटी कहीं ना एते जिनस जोटा कि मार्केट रे हम देखियो इट इज मोर देन लाख्स ऊपर से माने नौचन है बट हियर वी आर टेकिंग ओनली 6500 आ जदी तुम 6500 माने जदी तुम नौच कोटा यू आर क्लियर 360 आउ डाला ओनली प्रीलिम्स कम मेंस जोटा कि 4499 4500 भी नुह 4500 अप्रोक्सीमेट बट आई वुड सजेस्ट कि क्लियर 360 नबो कहीं ना बहुत सारा जिनस ऑफर से आसुची जोते कि तुम पेपर एवल्यूएशन प्रीलिम्स मेंस एंड 1-to-1 मेंटरशिप रो तुम पाई परिबो हैला दैट इज द बेस्ट थिंग्स व्हाट आई एम टू कन्वे हैला सेतरे पढाबो एठी जो तुम पढुछ प्रतियोगी बैच रो जोटा कि एठी मु पढौची हैला एथरे तुम केवल गोटे जिंस तुम कोन देखुछ आमे तुमको ओवरऑल गोटे पर्टिकुलरली सरफेस आईडिया जो स्किल्स केमती क्वेश्चन डेवलप करियो बट डिटेल स्टडी तुम क्लास रे ही पाई परियो सिलेबस वाइज पूरा वी आर कवरिंग ओके सो नेक्स्ट देखिबा पुणी ओके सता पूर्व कौन है इग्नियस रॉक्स मु कहली व्हिच आर द फॉलोइंग कूलिंग द हॉट मैग्मा magma igneous कौन igneous is formed when magma is liquid molten rock cools or set or solidified with the rock and rock formation जब cool है and solidified in the rock formation किशोर पचारछि सर एटा फ्री ना कौन हाँ यस किशोर दिस इज कंप्लीटली फ्री वे आर प्रोवाइडिंग पीडब्ल्यू रो जदि तुम सबू देखिबो है ना ऑल इंडिया बेसिस रे माने पर्टिकुलरली हम ओडिसा रे गोटे मु तो कहबी गोटे रेवोल्यूशन बिकॉज़ है एक्सपीरियंस हिसाब रे जदि तुम कहबी इट्स एन वेरी गुड स्टेप और बहुत जिंस निया होची काहे कि ना एवरीवन कैन एक्सेस द योर स्टडी माने मोस्टली पर्टिकुलर कहबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जनरली सब जगह बहुत हाई रेट रे दिया होची बट एठी एवरीवन कैन एक्सेस जोटा कि तुम देखि परियो गुड आफ्टरनून सुकांती गॉड ब्लेस है ठीक अच्छे तो सक्षम बैच को समस्त नियो सक्षम बैच से बहुत जिनस अच्छी ठीक अच्छे एंड दैट टू भाव 1.5 वर्ष वैलिडिटी तुम पाउच ऑलमोस्ट है अच्छा नेक्स्ट देखिबा सो इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा व्हिच इज लिक्विड मोल्टेन रॉक एंड कूल सेट सॉलिडिफाइंग इन द रॉक एंड रॉक फॉर्मेशन दिस मैग्मा और मोल्टेन रॉक एमर्जेस टू द सरफेस मतलब एमर्ज माने बाहर को पड़े आसे तुम देखुच एमर्जेस फ्रॉम द सरफेस है बाहर को पड़े आसला सरफेस ऊपर और एटा हला तमर कोन पर्टिकुलरली एटी जदि हम कहबी दिस इज योर अर्थ सरफेस एटा हला हमर कोन अर्थ सरफेस है दिस इज योर अर्थ सरफेस है इट एक्सपीरियंसेस एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच फोर्सेस to cool and crystallize the forming rock. Process to cool and crystallize the rock. The word igneous is derived from the Latin word igneis. Who to derive it? Ignis root. That means fire. This describes how magma and rock that has been melted by fire. This is the basis of igneous rocks. Basically, this is the basis of igneous rocks. नेक्स्ट हम क्वेश्चन पुणी करबा ठीक अछि ओके नेक्स्ट करबा पेट्रोलॉजिस्ट इज द स्टडी व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स लैंड रॉक्स फॉसिल्स कहले रे पिले पेट्रोलॉजिस्ट को स्टडी को बिलोंग करे एनिमल लैंड
पढ़ी के आंसर दियो सब यस सो आंसर जदि कहबी इट इज योर ए समस्त ए को चूज करछ एंड इट इज करेक्ट सो विल डिस्कस दिस वन हैला नेक्स्ट करो द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर केते गोटे क्वेश्चन पळे आसी कर दियो क्लाइमेट रो कर दियो 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड 6.4 7 7.4 कहले एटी को एटी मु कहि देबी आंसर टा आई विल डिस्कस डोंट वरी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर क्लाइमेटोलॉजी रो क्वेश्चन पछी नॉर्मल जीके टाइप रो क्वेश्चन एटा कहला यस नॉर्मल लैप्स रेट कोन कहलो केते रहइबो रैंक्स 14B चूज करछ रैंक्स आउ किए 6.5 रैंक्स ओके विल डिस्कस डोंट वरी ओके हला आंसर जदि हो दिस इज 6.4 ए नो कि सी नो कि डी नो इट इज बी हो बी फॉर बॉम्बे ओके डिस्कस करिवा केमती इट जदि हम कहबी नॉर्मल लैप्स रेट गोटे अछि अपन नॉर्मल लैप्स रेट हैला कोन इन ट्रोपोस्फियर एति जानो पढ़िबा हैला ट्रोपोस्फियर देयर इज डिक्रीज ऑफ decrease of 1 degree centigrade temperature if decrease करिवो in every 165 degree ascent माने जोटा कि जेते तमे 165 मीटर ऊपर को जीवो गोटे गोटे डिग्री सेंटीग्रेड तुमको तळ को जीवो हैला टेम्परेचर कम हो ता माने केते हबो एनएलआर कहंती ठीक अछि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप करुची 165 मीटर ऊपर को गले दिस इज द फार्मूला ता माने केते हबो जदि मोटी गोटे किलोमीटर देला माने केते रहइबो 1 कले पाका पाकी हला गोटे किलोमीटर माने केते 1000 मीटर पाका पाकी इनटू 6 कले हला ये भी इनटू 6 हला तो एटी केते हला पाका पाकी 6 डिग्री सेंटीग्रेड और 990 6 पॉइंट समथिंग रहइबो 6.4 और 6.5 like it right 6.4 और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हला कति रहइबो 1000 मीटर रे अप्रोक्सीमेट दिस अप्रोक्स ठीक अछि से जो कहते द हायर वी गो द कूलर वी फील हला आ माने हला एटा वेरी गुड ठीक अछि तो हम कोन पढ़ले इन ट्रोपोस्फियर as the altitude increases the temperature decreases हला altitude जते ऊपर जीवा योर temperature decrease करिवो alongside the normal lapse rate is 6.4 degree centigrade in 1 kilometer प्रति 1 kilometer normal lapse rate हला 6.4 degree centigrade for which at the extreme portion of the troposphere atmospheric temperature drops at about minus 70 degree centigrade la atmospheric temperature minus 70 degree centigrade रहिबो inversion of temperature is also observed in this region of the atmosphere inversion temperature भी ए region में देखा जाए हैला on the environmental lapse rate quasi is the rate decrease of temperature with altitude is the stationary atmosphere at a given time and location as an average हैला the International Civil Aviation Organization defines an international standard atmosphere with temperature lapse rate that is 6.49 kilometer particularly hela from sea level man rakha so this is the clear explanation hela next tapura kon deitla petrology is the study petrology kon कहबो petrology is the scientific study of rocks that deals with their composition texture structure and their occurrence and distribution हला पेट्रोलॉजी माने रॉक्स ऊपर स्टडी पर्टिकुलरली हला पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कौन को जाय स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विथ देयर कंपोजिशन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एंड देयर ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन
and their origin in relation to the physiochemical condition and geological process. In relation to the physiochemical process and geological process. It is concerned with all three major types of rocks: igneous, metamorphic and sedimentary. Igneous, metamorphic and sedimentary. Petrologists find certain types of rocks and analyze them in lab. Petrologists माने कौन करते जमती तमें IIT खड़गपुर जीवो कि IIT in fact in Delhi University also IIT खड़गपुर कि IIT Bombay IIT Delhi तमें देखियो petrology is a special department गोटे अलगा थाए है से डिपार्टमेंट रे समाने रॉक्स ऊपर समाने करंती एंड बेसिकली जियोलॉजी है बेसिकली determine their exact composition and how the best extract the valuable minerals and the natural resources of them. Right? ठीक अच्छी ओके नेक्स्ट जीवा देख यही सब जिनस गुड़ा तुम जो करुच पढ़ुच ये पढ़ा है मन रख इफ जदि तुम कोर्स मुझे कहबी अवेल करुच जो यू आर बेसिकली द न्यू कमर्स है पढ़ा गुड़ाक एंड यू आर प्लेस्ड एंड डिस्टेंट फ्रॉम द भुवनेश्वर है कि मैक्सिमम जो जॉब होल्डर अच्छ पीडब्ल्यू रो सब कोर्स गुड़ा दिस इज वेरी यू आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल कवरेज तुम सिलेबस वाइज और दैट भी सब चैप्टर तुम पाच है तो डाउनलोड कला तुम फ्री रे तो ये जिनसा पाच बट तुम जो एक्जाक्टली सिलेबस वाइज कवरेज तो तुम क्लास रे हम जो कि तुम आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो फॉर द सक्षम बैच दिस इज रियली एन वेरी वाइब्रेंट and it prove beneficial for your preparations. Okay, 15-16 देखिए the shortest duration of twilight occurs at 𝐂𝐃 K2 नंगा पर्वत माउंट एवरेस्ट नंदा देवी कहल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब अच्छे आज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन shortest duration की कई बार आंसर ट्यूबलाइट occur yes K2 नंगा पर्वत माउंट एवरेस्ट नंदा देवी निज निजर इंटेलिजेंस लगाओ सिंपल कॉमन सेंस लगाओ को कोटा हो परिबो K2 नंगा पर्वत माउंट एवरेस्ट and Nanda Devi. Yes, we can say anyone answer Rohit ranks किसी ने भूल हो ठीक हो आंसर दिया नो प्रॉब्लम है आंसर जो देखियो K2 नंगा पर्वत माउंट एवरेस्ट इट इज आंसर इट इज योर C माउंट एवरेस्ट है K2 नंगा पर्वत नंदा देवी विल डिस्कस दिस वन काई कि मु K2 कहे है माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट okay the earth is tilted on its axis then it revolves around the sun. Earth is an outer planet. Earth has an elliptical path. Which one is correct? ABCD bhitru hela kiya bhitru correct. Which one of the following statement is not correct? The earth is tilted on axis, it revolves around the sun, earth is an outer planet, earth has an elliptical path. Pahila which one? 16. Which one is correct? Vijay,
which answer dela C. Anyone else? Not correct. Question ठीक है और पढ़ो. Question is given as not correct. Yes, choose the answer. Okay, answer देखियो, it is C है ना. A नुह कि B नुह कि D नुह, it is answer is C. It is an outer planet. Discuss करिवा कौन प्रथमे 15 नंबरटा करिवा. ठीक अछि. ट्विलाइट 15 नंबर है माउंट एवरेस्ट. सी द शॉर्टेस्ट ट्यूलाइट माने सबुठु कम सूर्यंकर है माने तमर ट्यूलाइट रे कोन हो द सनराइज आर लेस. पर्टिकुलरली ट्विलाइट इज एन 1 hour 10 minutes फेनोमेना. पर्टिकुलरली है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट जतरे कि टिके है ना बेसी पूरा दिन नथिवो कि राति नथिवो. ट्विलाइट फेनोमेना ना पूरा दिन ना पूरा राति. occurs at the equator where the sun rises and sets at right angles to the horizon throughout the year. Okay, the longest twilight occurs at the poles. जदि मैं कहबी पोल है longest twilight. अर्थ जदि मैं कहबी पोल कोन पई कि मो डायग्राम बनौची. एटा ला नॉर्थ पोल ऑन द नॉर्थ पोल ला मैं कहूची. सपोज गोटे एग्जांपल नॉर्थ पोल आ एटा ला सन. दिस सन sun. कौन देला? The sun rises and set at right angles to the horizon throughout the year. The longest twilight occurs at the poles. It lasts for about 6 weeks before the annual sunrise and after the annual sunset. After the annual sunrise and sunset. Pole जो तुम कहीं भी कौन sunlight particularly twilight. Basically, कहीं this is oblique rays. oblique rays पड़छ सूर्यंकर है. this oblique, this is south pole, north pole and south pole. this is your equator. twilight so एजु को बुझी हला काई नॉर्थ पोल सूर्यंकर oblique rays. एटी कोन आसी डायरेक्ट रेज आसी कोडी ट्रॉपिक माने टॉरिड जोन ऊपर और ट्रॉपिक्स ऊपर देला डायरेक्ट रेज. डीआर को लिखली तेजु ट्यूबलाइट. This is the basics fundamental that you have to accept this one. You have to learn this one. Okay, basics inside. The longest period occurs at the poles and lasts for about 6 weeks for 1 night. That is before the annual sunrise, after the annual sunset. The duration of the twilight period also varies to a greater extent depending on the latitude. Depending on the latitude, it is also varies. It can last from a few minutes in equatorial regions to many hours in polar regions. Polar regions रे few, equatorial रे few minutes जोटा मैंने कहली 1 hour 10 minutes, but polar रे एटा आहुरी अधिका सूर्यंकर. This is the concept of मन रख. काहे कि again सूर्यंकर तिरछा किरण पड़छ. oblique rays माने तिरछा किरण, oblique तिरछा किरण कहंती. So dawn जदि मैं कहबी dawn कोन गोधूली जेमति तमरो जेमति संध्या बेलटा सॉरी सकाळ ऊपर भोर बेलाटा को कहंती मन रख dawn आउ डक्स कहंती गोधूली जोटा तमरो कोटा जेतल तमरो माने जेतल व्हेन सनसेट है संध्या बेला टाइम टा पूर्व सनसेट राति हेबा पूर्व सेटा कहंती डस्क. dawn है भोर बेलाटा. So dawn is the beginning of the twilight before sunrise. Twilight is the beginning of the twilight. dawn तक माने भोर बेला तक कहा जाए. Twilight is the time period between the dawn and the sunrise. dawn and the भोर बेला sunrise ऊपर and the sunset and dusk. मन रखा एटा जोटा म कहि sunset और dusk एटा हला sunrise और dawn भोर बेला. twilight हला से मिडिल टाइम टा जोटा कि सेही टाइम टा तमरो पोल रे बहुत समय अधिकाटा.
dawn occurs once per a day particularly ହେଲା ओके ठीक अच्छे which तापर तमे जो पढ़िलो कि which one of the following statement is not correct the earth is tilted on its axis revolves आ भितर एटा हला कट earth is not an outer planet मन रखो एटी जदि हम कहबी earth हम earth हला earth is an inner planet हला inner planet outer planet no earth हला inner planet no outer planet no it is inner planet बाकी रेस 3 are correct हम देखले रेस 3 are correct next करो 17 question again the local time हला at 100 degree east is 7 am Tuesday what is the local time at 120 degree west एटा करिलो करो जेमती तमे आगडा क्वेश्चन कलो सेमती गोटे प्रैक्टिस करो मझरे मझरे गोटा करो ए भले क्वेश्चंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से माने पचारुछन दिस इज वेरी कंपलसरी क्वेश्चन करो ए क्वेश्चन टा 5 pm 20 Monday 4 pm 20 minute Tuesday 5 pm 20 minute then your 20 minute Tuesday then 4 pm 20 minute Monday एटा कलो सॉल्व करो कि मते एटा सॉल्व करी कहबो लेट मी नो 17 नंबर सॉल्व इट 2021 प्रीलिम्स रे 22 प्रीलिम्स रे आसी थरा ऑलरेडी दिस इज अ वेरी कॉमन बेसिक थिंग इन ज्योग्राफी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आरंभ रे क्यों हला ये सॉल्व करी कोची who is going to solve this one yes Priyanks Rohit सिक्सटीन 17 नंबर किए कौचे मुझे सॉल्व कर दूची है डोंट वरी देखो अगेन मुझे कर दूची क्वेश्चन कौन अच्छी ये अगेन जीएमटी लाइन भला भी शुण 0 डिग्री जीएमटी लाइन है लॉन्गिट्यूड आउ तो आम कौन जानले वेस्ट पट को गले सॉरी दिस इज नॉट वेस्ट ईस्ट पट को गले तमे टाइम गेन करछो इफ यू आर गोइंग फॉर ईस्ट यू आर गेनिंग टाइम हला गेनिंग टाइम वेस्ट पट को आछो टाइम लॉस हला तो कौन दला लोकल टाइम एट 100 डिग्री ईस्ट तुम कहबी 100 डिग्री ईस्ट दिस इज योर 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड केते हला सपोज गोटे प्लेस दला ए जगह रे सपोज टाइम प्लेस 100 डिग्री माने सपोज मु नेली लेट्स से इन थाईलैंड मु कहली हला थाईलैंड गोटे जगह थाईलैंड रे हला बैंकॉक रे सपोज टाइम केते अछि 7 am ट्यूसडे है मंगलवार सकाल 7टा व्हाट इज द लोकल टाइम एट 120 डिग्री वेस्ट 120 डिग्री वेस्ट एटी है लोकल टाइम लेट्स से मु यूएस रे गोटे जगह नहीं यूएस रे एटी लोकल टाइम रे केते आराउंड केते 100 पुनी सेम जिंस पुनी हला जदि हम कहबी सेम जिंस कोन एटी देखिबो कौन है पुणी ये डिफरेंस है केते लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस x और y मुझे नेली x एंड y डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस x एंड y
है केते है मुझे लिखली आंसर टा अगेन लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बोला भी देख लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस केते है लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस फ्रॉम कोठी यूएस रो नहीं कि थाईलैंड फ्रॉम यूएस टू थाईलैंड फ्रॉम यूएस टू थाईलैंड केते है x प्लस y तुम केते x प्लस y तो ये केते अछि 120 लॉन्गिट्यूड एटू एतिक डिस्टेंस 120 प्लस एटू एतिक 100 देछि कि नहीं 120 प्लस 100 तो केते है 120 प्लस 100 है 100 सो केते है 220 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस अगेन 220 लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस हमें कौन जानछन पुणी कि अर्थ बुलुछ केते हमें जानले केते 24 घंटा रे 24 आवर्स आउट पूर्व करते 360 डिग्री गोटे घंटा रे 15 डिग्री ये आम जानले तो माने 60 मिनट सो गोटे डिग्री बुलिया केते 15 डिग्री बोलছে 60 मिनट गोटे डिग्री बुलला केते 60 बाई 15 त माने केते 4 मिनिट तो पृथ्वी बुलिया पे हम जानले केते 1 डिग्री बुलुची 4 मिनिट रे हला दिस इज द कॉमन सो इट केते 220 into 4 मिटी कहली मान केते 880 मिनिट आकु कन्वर्ट कर आवर रे गोटे घंटा हला 60 मिनिट 60 मिनिट भले केते हला 1272 हला एटी रोज केते 1272 720 14 घंटा पखापाखि 1484 रोची 14 आवर्स हला 14 आवर्स 40 मिनिट पखापाखि 840 800 मिनिट एटा बुझीला 14 घंटा ता माने पाखापाखि जदि एतिकी टाइम टा जोड़ा अच्छी थाईलैंड रे 7टा AM पाखापाखि यूएस रे 14 घंटा पछरे अच्छी हैला 14 घंटा पछरे पाखापाखि माने केते हैला 14 घंटा पछुक आस केते रहइबो पाखापाखि वेस्ट टाइम हैला 14 घंटा 7टा AM ट्यूसडे अच्छी तमे पछुक आस ट्यूसडे माने सकाळ माने तमे पुणी संध्या 5टा पछुक पळे आस ना 5 माने तमे ठीक 24 माने ठीक 12 घंटा फेड पछुक आस माने कोन टाइम लॉस होउची कि नहीं 14 घंटा पछुक आसले केते हो 7टा रु त माने ठीक संध्या 5टा पाखापाखि होतो आंसर हैला एटा ठीक 5 PM 20 मिनिट्स मंडे ए तमे निजे नै कि देखो 14 घंटा 40 मिनिट पछरे सेठी हिज केते सकाळ 7टा 14 घंटा 40 मिनिट पाखापाखि एटा दिस इज द आंसर माने यूएस रे हिच केते एटी टाइम 5 PM संध्या 5टा 20 मिनिट मंडे भलो भाबे जाई घरे आउतर देखिबो एटा पढौची रेकॉर्डिंग हैला तमे जानिबो पाखापाखि यूएस रे जो टाइम टा पाखापाखि 5 हैला संध्या 5टा 20 मिनिट मंडे ए बडा क्वेश्चन सब आसुची डोंट टेक इट लाइटली परीक्षा रे यूपीएससी भी पचारुची केबे भी अजम्पशन रे पाठ पढनी अजम्पशन रे पाठ पढले पूरा भूल केबे भी पचारेनी माने निजर पाठ पढबेनी आज पर सिलेबस समस्त पाठ पढ़ डेफिनेटली जिनसटा को तमे करि परिबो परीक्षा रे हैला एंड ऑलरेडी फॉर योर इंफॉर्मेशन ए बडा क्वेश्चंस ऑलरेडी से माने पचारुचंती ठीक अछि ओके देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन सारदवा श्रीलंका's old capital Colombo is situated at eastern part of Sri Lanka, western part of Sri Lanka, central part of Sri Lanka, southeastern part of the Sri Lanka. ABCD ru कहले 18 नंबर ABCD भितर Colombo कोठी Colombo is located on which part?
Yes, we can say. Let me know. Colombo को पार्ट रे अच्छी हला कैपिटल कोलंबो हला इट इज इन द डी फॉर दिल्ली साउथ ईस्टर्न पार्ट देखिबा कोलंबो जदि देखिबे एटा तो हमरो ठीक अछि कोलंबो इज द हला योर is the commercial capital and the largest city of okay largest city of Sri Lanka अच्छा एटा हला तमरो 14 घंटा जो फेडिलो एटा मु टिकेट करेक्ट करछि 7टा पर तमरो 14 घंटा तमाने एटा 40 मिनिट तमाने एटा 4 pm सॉरी एटा हला तमरो 14 घंटा फेरला पर तमरो एटा हबो 4 pm मंडे एटा डी प्लीज मेक इट एज डी काहे कि ना 14 घंटा 40 मिनिट मु सेटा कहते सेटा हला 13 घंटा 40 मिनिट हेतले मोर पेडिबर टिके कहबार भूल हैला एटा माने 7टा तुम 40 मिनिट माइनस करिवो त माने एटा 4टा pm 20 माने सब ठीक अछि माने 5 जगह 4 हेबो बट एटा तुम बुझो भलो हैला एबा आसियो कोलंबो कथा कहली हैला Colombo is the commercial capital and the largest city of Sri Lanka by population according to the broking institution. Colombo metropolitan area is a population of 5.6 million in the city proper. The financial center of the islands and a tourist destination. Colombo बहुत ही बढ़िया जगह माने जदि हमें रामायण कथा मु जदि कहिबी रामायण रे particularly श्रीलंका has an very pivotal role. In fact तमने गोटे पिक्चर मूवी भी देखिथिबो हला से मूवीटा ना कोन रे अक्षय कुमार थिला सेटा को मूवीटा राम सेतु मूवी मु कहबी जो माने सिविल सर्विस दोचो राम सेतु मूवीटा देखो राम सेतु मूवी रे तमे बहुत जिंस शिक्षा को पाइब हैला so it is the financial center of the island and the tourist destination. It is located in the western coast of island and adjacent to the greater Colombo area which includes Sri Jayawardenapura Kotte हैला Sri Jayawardenapura Kotte okay. Then the legislative capital of Sri Lanka and Dewan Mount in Colombo is often referred to as the capital since Jayawardenapura Kotte is particularly. जब मैं कहबी श्रीलंका रा प्रथमे जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर थिले ताटी श्रीमाबो बंदरनाइके जे केले प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हला वर्ल्ड श्रीलंका बहुत सुंदर गोटे स्मॉल आइलैंडिक पार्ट हला श्रीलंका जदी हला जदी तमे देखिबो इट इज बेसिकली बुद्धिस्ट और प्लस तमिलियंस मानकर मेजर सिटी है ओके ठीक अच्छे अच्छा पुणी जदि मु कहबी हला एतिक रे एबे जो जिंस गुडा हमर पढ़ा होची मु तुमको आज भी कहबी कि ओपीएससी तरफ जो जो जिंस हम तुम पढ़ु छ दिस इज द सक्सेम बैच जोटा कि अगेन हला दिस इज वेरी वाइटल जोतरे कि तुम मैक्सिमम जिंस हला तुम इथरे पाई परिबो खाली प्रीलिम्स नो ऑल 3 राउंड प्रीलिम्स मेंस आउ तमरा इंटरव्यू गाइडेंस भी तुम पाई परिबो जेतले तुम क्लियर आर्डन 360 नो हला दिस इज द बेस्ट हला सक्सेम बैच अक्रॉस बैच हम ऑलरेडी स्टार्ट हिची एटा 4499 कैन यू इमेजिन जोतरे कि आर्डन करले तुमको आहुरी भी तुमको बेनिफिट हो जोतरे कि सेतरा ऑप्शन थिबो सो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द क्लियर 360 along with this one संग हमर ओडिशा महापैक दिया ओनली 1299 रे एंड उडंते हाई कोर्ट वर्तमान तमे देखिथिबो तो एएसओ रो हाई कोर्ट हमर ऑलरेडी बाहर गेलानी एंड कैन यू इमेजिन लेस देन 800 रे तमे पाउचो जस्ट थिंक ऑफ दैट वन हैला सो जो पर्टिकुलरली जो पढिबा अफोर्डेबल इज आल्सो मनी हैला जो पर्टिकुलर इते अफोर्डेबल प्राइस रे कोर्ट भी तमे पाउचो ठीक ओनली 799 रे एएसओ हाई कोर्ट तमे पाउचो एंड ह्यूज वैकेंसी हैज कम अप नाउ हैला केवल पीडब्ल्यू जिनसर एटा एते प्रोवाइड करछ एंड एवरीवन इज कमिटेड विथ द गो फॉर द सिलेबस दैट इज हैज टू बी नोटेड आउ कोन जाबाज ओडिशा पुलिस बैक भी 699 रो ओनली ओडिशा पुलिस कॉम्बो बैक 299 संरक्षक गोटे जुडिशियल हला पर्टिकुलरली ओडिशा पुलिस पई पर्टिकुलरली 399 हला 399 जुडिशियल नो दैट इज योर पुलिस बैक तो वर्तमान तुमको मु कहबी वर्तमान हाई कोर्ट ता एसो हाई कोर्ट दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट आउ संरक्षक और खास करी जदी तमे पर्टिकुलरली तुम 800 रे हे गेला लेस देन प्लस एठी जति तुम सक्षम नो जो क्लियर 360 जोटा कि तुम वैलिडिटी रहबो तुम केते वैलिडिटी तुम रहउची पर्टिकुलरली हला केते
December 2025 पर्यंत. Can you know this validity is this one? This is unmatchable. This particular has given particularly. And rather जदि कहबी ए जो वर्तमान रहउची हमर फ्री रे पढा होची तमर जो तमे गाइडेंस रहउचो, you just have to be PW app तुमको डाउनलोड करिया पड़िबो. App डाउनलोड कला परे you can access to those things. Otherwise तुम access करि परिबनी. You can access to the particularly जो भी lessons तुमको दिया होची. अब खाली एटा नो, ठीक अछि. जदि मु कहबी particularly इथिरे तमे सब टाइप रो तमर अछि हला प्रतियोगी बैच जोटे कि हमर एठी प्रतियोगी बैच तमे हला आप यू हैव टू डाउनलोड द आप डाउनलोड करिया को पड़िबो हला आप डाउनलोड करिया पड़े. आप डाउनलोड कला परे जाई कि तमे यू कैन एक्सेस. खाली एठी नो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस टेक सब जिंस कवर छी. इवन इफ करंट अफेयर्स सब जिंस एवरीवेयर हला आ सी चैप्टर भी दिया होछ हला. सो होपफुली दिस एंजॉय हला you will enjoy these sessions. We'll meet again. Thank you all of you. Thank you. Okay, anything to ask before I culminate? We'll meet again. किछि पचारि बरे पिले. Okay. So thank you all of you. Bye bye. Take care. Thank you. Take care. Thank you. We'll meet again in the next session. Till then, निज निजर ध्यान रख. भलो भाबे रिवाइज करो. एनसीईआरटी पढ़ो. हला मैपिंग देखो, पेपर पढ़ो. हला आओ सुस्थ रहो. हला टेक केयर. जय जगन्नाथ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव ए गुड डे.